স্বাগতম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কথামতে তেওঁলোকে যে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ দিনা মাত্ৰ 100 দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকত 100 দিনৰ ভিতৰত 5টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে কংগ্ৰেছে যি কয় সেই কাম কৰি দেখুৱায় আমি জনাইছো টাইমত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু 100 দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 5টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি মাত্ৰ 100 দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী যি প্ৰতিশ্ৰুতি কিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাইছে ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ দিনাই অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত কৰ্ণাটকত মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে গৃহলক্ষ্মী যোজনা এই যোজনাৰ অধীনত এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মাহে 2000 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কেৱল ইমানেই নহয় কৰ্ণাটকত গৃহজ্যোতি আঁচনিৰ অধীনত 200 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী সকলোকে প্ৰদান কৰা হয় কৰ্ণাটকত চলি আছে শক্তি যোজনা আৰু শক্তি যোজনাৰ অধীনত মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা প্ৰদান কৰা হয় কৰ্ণাটকত যুৱনিধি আঁচনিৰ অধীনত নিবনুৱাসকলক প্ৰতি মাহে 3000 টকাকৈ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু এইবাৰ পঞ্চমটো প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে পূৰণ কৰিছে ইফালে অন্য ভাগ্য আঁচনিৰ অধীনত বিপিএল পৰিয়ালক প্ৰতি মাহে 10 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদান কৰে এই অনুষ্ঠানত আজি যি মহিলাসকলক প্ৰতি মাহে 2000 টকা প্ৰদান কৰাৰ আঁচনি উন্মোচন কৰা হয় অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে যি কথা কয় সেই কাম কৰি দেখুৱায় আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম আজি অনুষ্ঠানত চেক বিতৰণ কৰা হৈছিল টেবলেটৰ জৰিয়তে ডিবিটিৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে দৃশ্যাংক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী নিজে উপস্থিত আছে সিদ্ধাৰামায়া উপস্থিত আছে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে ডিকে শিৱকুমাৰ উপস্থিত আছে আৰু সকলোৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছে এই আঁচনিখন ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ দিনাই কৰ্ণাটকৰ মহিলাসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিছে আৰু অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে মাত্ৰ 100 দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকৰ জনতাক যি 5টা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই 5টা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে এইদৰে টেবলেটৰ সুইচ টিপাৰ লগে লগে কৰ্ণাটকৰ এতিয়া মহিলাসকলে প্ৰতি মাহে 2000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি ৰাখি পূৰ্ণিমা আৰু ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ দিনাই কৰ্ণাটকৰ মহিলাসকলৰ বাবে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বৃহৎ উপহাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে আমাৰ নেতাই যি কথা কয় সেই কথা আমি কৰি দেখুৱা বুলি নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে 5টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 5টাকৈ গ্যাৰান্টি আছিল কংগ্ৰেছৰ এই 5টা গ্যাৰান্টি চৰকাৰ গঠনৰ মাত্ৰ 100 দিনৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা এক গ্যাৰান্টি আছিল সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰতি মাহে 200 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী আন এক গ্যাৰান্টি আছিল কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলে বিপিএল পৰিয়ালক প্ৰতি মাহে 10 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছিল নিবনুৱাসকলক প্ৰতি মাহে 3000 টকা দিব আৰু মহিলাসকলক প্ৰতি মাহে 2000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আঁচনি সেই গৃহলক্ষ্মী আঁচনি আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে উন্মোচন কৰি কৰ্ণাটকৰ জনতাক প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं माताएं हैं उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा स्कीम का नाम शक्ति था उसको भी हमने पूरा कर दिया आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने
हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़े। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को
सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए मिले। जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए मिलेंगे। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे